हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में सर्कल को स्टडी करेंगे। सर्कल से रिलेटेड टर्म्स जैसे कॉर्ड, टेंजेंट, सेंटर, रेडियस, इन सारी चीज़ों को हमने स्टैंडर्ड 9th में ही पढ़ रखा है। अब हम इन सारी चीज़ों को इक्वेशन के थ्रू हैंडल करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं: स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल जो होता है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर जो होते हैं इन पांचों में होते हैं सर्कल। सर्कल में 7 to 8 फॉर्मूले होते हैं प्लस स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले मिलके सर्कल्स बनते हैं। सर्कल्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सर्कल्स को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसे। चलिए सबसे पहले हम लोग सर्कल के डेफिनेशन देखते हैं। तो सर्कल के डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट in a plane whose distance from a fixed point is constant। क्या कहा गया? locus of point, ठीक है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from a fixed point, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? हमारा सेंटर। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। ओके, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब देखिए ये सारे पॉइंट्स की ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मिलके लोकस बना हुआ है। लोकस में सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलके सर्कल बने हैं, और इन सारे पॉइंट्स का प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी ये है कि सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक फिक्स्ड है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम चले जाएं इनके सरकमफ्रेंस तक, तो क्या होगा? ये सारे सब के सब रेडियस आर होंगे। तो यही बोला गया सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट, मीन्स ये पूरे सेट ऑफ पॉइंट्स है। सर्कल को जो बनाया गया है बहुत सारे पॉइंट्स से मिला के बनाया गया है, और इन सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि कुछ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि सेंटर से डिस्टेंस ऑलवेज इसका कांस्टेंट है, किसी भी डायरेक्शन में हम चले जाएं। ओके, तो ये था हमारा सर्कल का डेफिनेशन। चलिए अब हम लोग सर्कल के इक्वेशन ऑफ सर्कल देंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए हमें सर्कल का इक्वेशन डिराइव करना है। मान लेते हैं अब हम लोग तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आए, तो ऑफ कोर्स हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बातें करेंगे, और हमने स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट्स वगैरह को हमने हैंडल कर रखा है। लेट सेंटर ऑफ सर्कल भी h कॉमा के, क्योंकि सर्कल के डेफिनेशन से दो बात साफ होता है कि वो तो एक बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है, और एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो हमें तो पहले वो फिक्स्ड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया? h कॉमा के। अब देखिए जितने भी पॉइंट्स है, ये जितने भी पॉइंट्स है सबकी एक प्रॉपर्टी सेम है, और प्रॉपर्टी सेम क्या है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, इस पॉइंट का डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है? कांस्टेंट है, और वो किसके इक्वल है? जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पे हम सारे पॉइंट्स को हम एक सेट कह सकते हैं। एक सेट कह सकते हैं ना। सेट क्या होता है? एक सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कोई भी सेट को डिफाइन करने के लिए एक सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जितने भी पॉइंट्स है इनका एक प्रॉपर्टी क्या है कि इस सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग सेट ऑफ पॉइंट जो है, तुम सारे पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं? P कलेक्टिवली x, y, ठीक है ना? PI, ये क्या होगा? P1, P2, P3 डॉट डॉट डॉट, ये टोटल होंगे P इनफाइनाइट, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो टोटल इनफाइनाइट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है उसका
प्रॉपर्टी यह है कि h कॉमा के कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या है उसका ऑलवेज सिमिलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द डिस्टेंस बी r which will be known as radius. So using distance formula x minus h का स्क्वायर प्लस y minus k का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ दिस इक्वल्स टू r. So squaring both side we can write x minus h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is h, k and radius is r. ओके, तो देखिए एक्चुअली क्या है यहाँ पे x और y क्या है, x और y ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या है कि ये जो सर्कल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना है. अब हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट्स को लिख नहीं सकते हैं एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो हमने टोटल पॉइंट को, जितने भी पॉइंट्स हैं और इसका बेसिक प्रॉपर्टी जिसपे हमने सर्कल को डिफाइन किया है कि सेंटर से डिस्टेंस उसका रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट है सारे पॉइंट्स का. तो हमने सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली x और y में लिखा है, जो कि ये है x और ये है y, ठीक है. और इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस h, k से हमेशा r है. हम सारे पॉइंट्स को तो चेक नहीं कर सकते ना, तो हम सारे पॉइंट्स के जगह हमने x और y ही ले लिया है. तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू r. स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमारा हो गया इक्वेशन. सेंटर जो हो जाएगा इसका h, k एंड रेडियस विल बी r. चलिए, ये अभी हमने क्या पढ़ा, सेंटर h और k हो और रेडियस r हो तो हम इक्वेशन का सर्कल हम ऐसा लिख सकते हैं. अब सेकेंड फॉर्म ऑफ हम लोग सर्कल पढ़ेंगे. ये था हमारा फर्स्ट फॉर्म जिसका सेंटर h, k था और रेडियस r था. सेकेंड फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन देखेंगे. तो पहला वाला जो हमने इक्वेशन देखा है वो है हमारा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. सेकेंड फॉर्म हम लोग इसी से डिराइव करते हैं, व्हेन सेंटर इज ओरिजिन. सेंटर इज ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0. तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. इट मीन्स सर्कल होंगे कुछ इस तरह के, ठीक है. सर्कल हमारा कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट होगा. चलिए, अब हम लोग थर्ड फॉर्म पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ये क्या है, हम लोग इसे स्क्वायरिंग करेंगे और ये कहेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0. हमने इस इक्वेशन को हमने टोटली एक्सपेंड कर दिया है. तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. हमने तो इसे एक्सपेंड किया है हमने, बट जनरल इक्वेशन जनरली हम लोग इसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये ऐसे लिखा होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बुक में अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों माइनस साइन के साथ, ये दोनों और ये सब क्या है, इक्वल है। ओके, ये दोनों ये दोनों ये दोनों सब क्या है, इक्वल है। तो अगर जैसे ये हमारा था थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और ये था जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। तो किसी ने हमें क्या, हमें क्वेश्चन किसी ने दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो ध्यान से देखेंगे हमें सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर मैच हो गया, वाई स्क्वायर मैच हो गया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिराइव किया है। ये इक्वेशन कहां से है, यहां से, ठीक है। और इस इक्वेशन में h क्या था, h और k हमारा सेंटर था, h और k क्या था, हमारा सेंटर था। तो एक और r क्या था, हमारा रेडियस था। तो हमें इस इक्वेशन में है क्या, हमें h और k फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर तो मैच हो गया इस एक्स स्क्वायर से, ये वाई स्क्वायर मैच हो गया वाई स्क्वायर से, और यह क्या, यहाँ क्या है, -2h मैच हो गया 4 से, देन -2h इक्वल्स टू 4, therefore h equals to -2 and -2k equals to 6, -2k equals to 6 ना, so -2k equals to 6, therefore k equals to -3। तो हमें सेंटर क्या मिल गया, h, k हमारा जो सेंटर था वो हमें मिल गया, और वो है -2 एंड -3। क्या है हमारा सेंटर, सो हमारा सेंटर है, सेंटर जो है हमारा वो है -2 एंड -3। अब हमें बोले रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तुम लिखेंगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 1। h स्क्वायर, h का वैल्यू क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर विल बी 4, प्लस k का वैल्यू क्या है, -3, k स्क्वायर विल बी 9, माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम r को अगर हम कैलकुलेट करें देन r विल बी √12। तो हमारा रेडियस हो गया √12 और सेंटर हो गया -2 एंड -3। ओके, तो अभी तक हमने 3 तरह के सर्कल्स पढ़े हैं, ठीक है। ये सर्कल्स, सबसे पहला सर्कल था जब सेंटर हमारा h के हो और रेडियस r हो, तो हमने ऐसा बता रखा था, हमने ये इक्वेशन पढ़ रखा है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा जब सेंटर हमारा ओरिजिन हो, फिर हमने पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इस फॉर्मूला से हमें आया था, जो इस फॉर्मूला से हमें मिला था। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म जो सर्कल है वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने एक एग्जाम्पल भी देख रखा है, इस कॉन्सेप्ट पे हमने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखे कैसे जाते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का तरीका है जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाता है 2g, ये हो जाता है 2f और ये हो जाता है c, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और h और k के अकॉर्डिंग 4 हो जाता है -2h, 6 हो जाता है -2k एंड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाता है 1, ठीक है ना।
तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन के बीच में हम कुछ और बातों को स्टडी करेंगे और वो होंगे ऐसा। और अब हमें एक सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे और वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन थे जो हमने उधर डिराइव किया था, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था और ये तो हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिया था। अब इन दोनों में कुछ बातों को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए हमने जैसे यहाँ पे कहा 2g इक्वल्स टू माइनस 2h, 2f इक्वल्स टू माइनस 2k, ये क्या होगा c इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो c पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो c जो होता है वो क्या हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहां से जो r स्क्वायर जो हमें मिलेगा, r स्क्वायर जो होगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। तो r हमें क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। तो रेडियस का हमें एक फॉर्मूला मिला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। अब देखिए फॉर्मूला में एक फंक्शन है और वो है स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को हम लोग, स्क्वायर रूट फंक्शन के अपने कंडीशन होते हैं। स्क्वायर रूट क्या कहता है कि इसके अंदर जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c should be greater than 0. When value of h square plus k square minus c will be greater than 0, then we will say it real circle. Real circle. It means circle will exist and we can draw it in our coordinate system because radius exists. When h square plus k square minus c equals to 0, then what it means, radius is equals to 0. This is equals to 0. So square root of 0 is 0. So radius will be 0. And when radius will be 0, it will be for a point. For a point, radius is 0. Because what is definition of point? Definition of point is it is dimensionless, no length, no breadth, nothing. So radius is 0 in all the direction, his length is 0. Okay, so this will be known as point circle. And when h square plus k square minus c will be less than 0, when value of h square plus k square minus c will be less than 0, then a square root, the value of h square plus k square minus c will be negative. So a square root of negative number not defined. So this will be imaginary circle. मतलब ये तो सपने में ही बनेंगे सर्कल, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसे हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हमने r का जो दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ r दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। सो वी हैव डिराइव्ड 3 अदर नॉलेज दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c विल बी ग्रेटर देन 0, so it will be real circle. When h square plus k square minus c will be equals to 0, then this will be point circle. And when value of h square plus k square minus c will be less than 0, then this will be imaginary circle, and we will not be able to draw this circle in our coordinate system. Okay, next we'll move to our next form, which is known as diameter form.
This is the fourth and last form, diameter form of circle. In diameter form, the ends of diameter are given. 2 points are given, and somebody will say, find the equation of circle on which this both point will work as end of diameter. Find the equation of circle, both the point will work as diameter of the circle. Okay, so what we need to do is, see, this is the point A, that is x1 and y1, and this is point B, x2 and y2, which is given and which is known. Like it can be 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3. It means it is known. So we need to define all the points. Equation define all the points. Okay, so we need to design the equation of this circle, which will define all the remaining points on this path, and this path is a circle. So what is the basic property of all the point? What is the basic property of all the point when we will connect any point with these 2 points? As you will remember, in 9th class we have studied this, that if we will connect any point, any one point to both the end of diameter, then angle made will be 90 degree. Any point, whether this is a small, this will be 90 degree, this will be 9, this will be 90 degree, means the angle will be 90 degree. So all the points will possess same property that if we will connect that point with both A and B, then angle made will be 90 degree. So let the whole point be xy. Okay na? Because what we define, circle is a set of points, and set means what? Set should have some similar property, and what is the similar property over here is the point when we will connect it to both the diameter, the angle made between them is 90 degree. So let all the points be x and y. Okay, let all the points be x and y, and what all the points will do is, any point when connected to A and B will possess 90 degree. So let the point be here is C. As AC is perpendicular to CB, AC is perpendicular to CB, then slope of AC and slope of AB, product of slope of AC and AB will be slope of AC and slope of AB will be -1. Okay, so slope of AC, what is slope of AC? C is the point x, y, and we know that slope of AC, this line will be y minus y1 upon x minus x1. This is basic formula which we have already studied in a straight line. So y minus y1 into x minus x1. This is slope of AC. Slope of AB. Slope of AB. Sorry, slope of not AB. This is slope of CB. So slope of CB na? Slope of CB. Because these both lines are perpendicular. Slope of CB will be y minus y2 upon x minus x2. Y minus y2 upon x minus x2 will be equals to -1. So we can write it y minus y1 into y minus y2 equals to minus of x minus x1 into x minus x2, and we can arrange this again and we can write it y minus y1 into y minus y2 plus x minus x1 into x minus
x2 equals to 0. So this is the desired equation of the circle. x1, y1, x2, y2 will represent the coordinates of end of the diameter. Okay, now moving to our next point. Next we are going to discuss some of the question. Find the equation of circle whose center is 1 minus 2 and radius is 4. So center is h comma k and radius is 4 given. So we can write x minus h k square plus y minus k square equals to r square. So x minus 1k square plus y minus 2k whole square equals to 4k square, and this will be x minus 1k square plus y plus 2k square equals to 16, and this is our required equation. Moving to our next question. Find equation of circle. This is find equation of circle short form. Find equation of circle which passes through the point of intersection of line, this both the lines, and whose center is 2 comma minus 8. So let me first discuss some of the concepts. Whenever in question, whenever we will see find equation of circle, then always remember, always we need to find two things: center and radius. Center and radius. In every question, whenever you will see find the equation of circle, then always remember we have to find center and radius. Once we find center and radius, then we'll easily find the equation of circle now. Okay, so here as we can see that center is already known. Now we need to know the radius. And what is radius? Radius is length. Radius is distance, length. So we need to find the distance. So one point is given, center is given, that is 2n minus 3. So we need to find any one point on this circle. If we'll find any point on this circle, then we can easily calculate the radius. If any one of the point is known, then we can easily calculate the radius of the circle. Okay, so let us see what are the other information that is given in our question. See here, circle passes through the point of intersection of line this. It means this circle is passing through the point of intersection of this line. It means circle is like this, and center is given, and the point of intersection of both the lines. It means we can get this point by solving both the equation. By solving both the equation, we can find this point. As center is known, so we will get the radius, distance between them, then we will apply distance formula to find this length. So solve both the equation. This is linear equation in two variable. We have already studied this type of concepts in a standard 10th and also straight line. So solve both the equations and get. So solving, we have two equations, that is 3x minus 2y minus 1 equals to 0, and second one is 4x plus y minus 27 equals to 0. See here, this is y, this is minus 2y, so multiply this whole equation by 2. Multiplying will get 8x plus 2y minus 54 equals to 0. Adding both will get 11x
this both will be cancelled out. Minus 55 equals to 0 and x will be equals to 5. X is 5. Put this x in any of the equation. Here it will be 15 minus 2y minus 1 equals to 0. Therefore y will be equals to 7. So this point is, one of the point on this circle is, it can be any point, this will be 5, 7. So applying distance formula, radius will be root over 7 minus 3, that is 10 to the square, plus 5 minus 2, that is 3 square, and that will be square root of 109. So this is the radius and this is center. So required equation will be x minus 2, x minus h is x coordinate of center, plus y minus of minus 3 ka square equals to r square. So r is root over 109, r square will be 109. So equation will be x minus 2 ka square plus y plus 3 ka square equals to 109, and this is our required equation. So what are the concepts that we have learned in this question is, whenever we need to find equation of circle, then always concentrate on finding center and radius. When you have find center and radius, then you can easily substitute that value in x minus h ka square plus y minus k ka square equals to r square to get the equation of circle. Our next question is, find the center and radius of the circle whose equation is x square plus y square minus 4x plus 6y plus 12 equals to 0. So this is minus 2h. This value minus 4 is minus 2h, plus 6 is minus 2k, and h and k is our center. So minus 2h equals to minus 4, minus minus cancelled, and h equals to 2. Okay, and minus 2k equals to 6, therefore k equals to minus 3. And h square plus k square minus r square equals to 12. Therefore r square will be equals to 3 chi square plus 2 chi square minus 12, and this will be give us radius will be equals to 13 minus 12, that is 1. So radius will be equals to 1. So simple, hk. So next question is, find the equation of circle, the coordinates of end of whose diameter is 1, minus 1, 2 and 4, minus 3. How many, just ask yourself, how many diameters that we can draw in a circle? Infinite. How many circles we can draw? How many diameter we can draw in a circle? So there are infinite numbers of diameter. So there are infinite number of diameters. The end of one diameter is given. One diameter is given. So we can easily find the equation using diameter form of circle. So let me discuss one other concept to find the equation of the circle. Let the given diameter be this. So end point is minus 1, 2 and 4, minus 3. What we need to find? We need to find equation of circle.
in previous question I have already said you that if you need to find equation of circle, then you need to find two things, that is center and radius. Radius is length, so radius is length and center are coordinates. We need to find this center. Once we will know this point, then we will easily calculate the radius, either by using distance formula between these both coordinates or using these both coordinates. So what is center? What is relation of center from the both end of diameter? The relation is, this is midpoint of both ends of diameter. So midpoint, it means 1 and 1. So midpoint formula, h will be -1 plus 4 by 2 and k will be -3 plus 2 by 2. So we'll get center 3 by 2, x coordinate 3 by 2 and y coordinate -1 by 2. So we have already calculated the center. Now calculate the distance between center and any one of both the points. You will get radius. Calculate radius and substitute this in x minus h chi square plus y minus k chi square equals to r square. So calculate radius using this distance formula and put h 3 by 2 and k minus 3 by 2, minus 1 by 2, sorry, minus 1 by 2 over here, and you will get the required equation. So moving to our next question. Find equation of circle passing through point of intersection of line this and this, and whose center is point of intersection of line this. Means point of intersection of line this is L1 and this is L2. Circle, this both the line intersect, let both the line intersect at any point P. So circle will, what happen? Circle will pass through this point of intersection, will pass through this point P. Okay, so and whose center is point of intersection of line this. Center is point of intersection of both the lines, means center is over here on point of intersection of both the lines. Okay, what we have to find? We have to find equation of circle. So whenever we need to find equation of circle, then we need to find two things, that is center and radius. Okay, center is point of intersection of both the lines. So solve both the lines and calculate the x and y coordinate. Okay, so x plus y plus 1, x minus 2y plus 4. On subtracting, we'll get 3y plus 3 equals to 0. So y equals to -1. Substituting -1 over here. Okay, what do you get? Pi minus y, minus 3. Minus 3. 1 minus 4 is -3 and y will be equals to 1. Y is 1, it means x will be equals to -2. So we get the center, that is -2 and 1. Similarly, find the point of intersection of these both the lines, x plus 3y equals to 0 and 2x minus 7y equals to 0. Of course, both the lines passes through origin, so point of intersection will be origin. You can find it. Okay, so now we know the center. Of course, we know the center. And what will be the radius? Radius will be distance between both the points. So using distance formula, square root 1 square plus minus 2 square, and that is equals to a square root of 5.
So required equation will be x plus 2 का square plus y minus 1 का square equals to root 5 का square. This is our answer. Moving to our next question. Find the equation of circle whose center is 1, 2 and passes through point 4, 6. Means find the equation of circle, center is 1, 2 and passes through a point 4, 6. So whenever we need to find equation of circle, we need to find two things, that is center and radius. We already know the center. Center is given in the question and radius will be distance between both the points. So we can easily calculate radius and will substitute the value in x minus h ka square plus y minus k ka square equals to r square. Moving to our next question or next concept. Intercept made by a circle on the axis.